we will discuss about the chapter number 4 from section A, that is effects of electric current. तो अपने चैप्टर का नेम क्या रहेगा? इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सो फर्स्ट अपॉन व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट. सो सबको पता है स्टैंडर्ड 9th में हमने इसके बारे में कुछ बेस पढ़ा था. व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? सो मेन वर्ड इसमें आपको याद रखने का है. इलेक्ट्रिक करंट मीन्स व्हाट? द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन. विद दिस स्टेटमेंट फ्री इलेक्ट्रॉन. The flow of free electron through a conductor is known as an electric current. So in this definition, this word that is free electron is more important. तो definition क्या हो जाएगा? The flow of free electrons through a conductor is known as an electric current. Okay, next one. Now when current passes through a conductor, तो कुछ ना कुछ effects create करेगा. So what are the effects of electric current? So these effects are of two types, which are that the first one is heating effect of electric current and second one is magnetic effect of electric current. See it carefully. So heating effect and magnetic effect. So these are the two type of effects of electric current. So first upon what do you mean by heating effect? तो heating effect में we have to memorize the word that is heat. कौन सा word याद रखेंगे? Heat. So what is this heating effect? So we can say when current pass through a resistor. When current pass through a resistor, it produces heat. It produces heat. तो क्या produce करेगा? Heat in a conductor, and this effect is called as a heating effect of electric current. Repeat करो तो आपको memorize कौन सा word important रहेगा? When current pass through a conductor, it produces heat in a conductor. This effect is called as a heating effect of electric current. So what is the next one? That is magnetic effect. The both definition, heating effect and magnetic effect, are look like similar. Because in first definition, when current pass through a resistor, it produces heat. So in this condition, it produces a magnetic field instead of heat. So what is the definition? When current pass through a resistor, again when current pass through a resistor, it produces magnetic field around the conductor. Magnetic field around the conductor. So you have to memorize heating effect में heat produce होगा, magnetic effect में magnetic field produce होगा. To the next point. डिस्कवर्ड बाय जूल्स. अभी देखो जो पहला इफेक्ट हमने देखा था वो कौन सा था? हीटिंग इफेक्ट. सो हीटिंग इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट जूल, while magnetic effect it was discovered by scientist Hans Oersted. See the difference? ये आपको फिलअप में पूछा जाएगा. Heating effect was discovered by scientist James Joule and magnetic effect of electric current was discovered by Hans Oersted. So these are the example of heating effect of electric current. These are the examples of heating effect of electric current, that is heater, oven, toaster. So what are the example of magnetic effect? Electric motor and electric bell are the example of magnetic effect of electric current. Now the next one, ये वाला स्टेटमेंट डियर स्टूडेंट्स हमेशा याद रखो. हाई रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू हाई हीट. व्हाट इट मीन? तो हम लोग यहाँ पे एक सेंटेंस क्रिएट करेंगे दैट द हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर, हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the resistance. See the statement again. Heat produced in a conductor is directly proportional to the resistance of a conductor. Means what? जो heat conductor में produce होगी that is directly proportional to the resistance. तो simple statement क्या आएगा? जितना resistance high रहेगा उतना उसमें heat ज़्यादा produce होगा. And just because of that, the device which you are using such as electric heater, टोस्टर या फिर ओवन, ये सब में कौन सा रेजिस्टर यूज किया जाता है? जिसका रेजिस्टेंस हाई रहेगा. व्हाई? बिकॉज दोज डिवाइसेस आर यूज्ड टू प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड वी नो दैट हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस. सो जितना रेजिस्टेंस हाई रहेगा उतनी हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ऑल दिस इंस्ट्रूमेंट सच एज हीटर, टोस्टर, ओवन, हर एक में जो भी रेजिस्टर यूज किया जाएगा दैट रेजिस्टर हैव अ हाई resistance, and this is important for 2 marks for your exam. Next one,
In electric heater or cooker, nichrome wire is used as a resistor. This statement is popular important that in electric heater or cooker, nichrome wire is used as a resistor, while second one in electric bulb the tungsten wire is used. देखो स्टूडेंट ये वाले दोनों स्टेटमेंट आपको इंपॉर्टेंट रहेंगे फिलअप के लिए. तो इलेक्ट्रिक हीटर में कौन सा वायर यूज करेंगे? नाइक्रोम वायर. एंड इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज करेंगे दैट इज टंगस्टन वायर इज यूज. द क्वेश्चन इज दैट why tungsten wire used in electric bulb? See the question again. Why tungsten wire used in electric bulb? So electric bulb it works on heating effect of electric current. तो उसमें हम लोग को ज़्यादा लाइट चाहिए, लेकिन लाइट प्रोड्यूस कब होगी? जब ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी. एंड वी नो दैट इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस. तो यहाँ पे ये जो टंगस्टन रहेगा उसका रेजिस्टेंस हाई रहेगा. इवन इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज ऑल्सो हाई ड्यू टू दैट इट कांट मेल्ट. So due to high melting point and due to high resistance, tungsten is used in electric bulb. The next one, the unit of electric power is watt. The unit of electric power is watt, which is denoted by letter W. That is called as a watt. But in practice 1 kilowatt unit is used, and 1 kilowatt is equal to 3.6 into 10 raised to 6 joule. Actually this is 10 raised to 6. It's not 106. It's a 10 raised to 6 joule. So remember this part. So 1 kilowatt is equal to 3.6 into 10 raised to 6 जूल. सो इन दिस वे ये जो अपना लेसन था इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसका इंट्रोडक्शन हमने लिया है. 2 टाइप्स ऑफ इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, एंड ऑल दोज पार्ट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. होप डियर्स ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड वेरी वेल. थैंक यू.